Thank you. Yeah, thank you, Anupama ma'am. So good evening, everyone. Today we are gathered here to have a healthy discussion related to the concerns that we are having in mathematics teaching in today's era. So I think mathematics is the expression of human mind. And there is a quote by a mathematician that mathematics is the most beautiful and powerful creation of the human spirit. तो आज हम यहाँ इसी ब्यूटीफुल और पावरफुल क्रिएशन गणित विषय पर गहन चिंतन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे. तो उससे पहले हमारे साथ कुछ विशिष्ट अतिथिगण हैं, उनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करा दूं. We have Dr. Raghvendra Kumar Dwivedi with us. He has done MSc, PhD, MPhil and MEd also. He is having 29 years of experience, 15 years as PGT and 14 years as a principal. At present, Sir is working with Dalmia Group of School in Odisha as principal. Sir is Vedic math mentor and has written 10 books. Next, we have Miss Nilima Sharma with us. She is currently working as Associate Vice President, Trinity College, London. She is in education field from last 50 years as a teacher and as well as a principal. She is a Deputy Director of Education in Directorate of Education and KV. Ma'am has worked as education officer and consultant in CBSE and now pursuing her passion through the present organization. She has also worked briefly as consultant for NCERT. Next, we have with us Mrs. Aruna Shivraj. She is the principal of Himalaya Public School, Rohini, and she is the next eminent speaker from the field of mathematics. Also, we have Dr. Dharam Prakash sir with us. As Anupama has told that he is retired professor from NCERT. So now, without wasting any time, let's start with the discussion of the day. While it may seem like math problem have no real use in life, but I think that's not the truth. Maths is incredibly important in our life. हम बिना रियलाइज करते हुए बहुत सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट्स और स्किल्स जो हम मैथ्स प्रॉब्लम से सीखते हैं वो कहीं ना कहीं यूज करते हैं इन आवर एवरीडे लाइफ. So instead of using maths almost in our daily life, but students still, most of the students have the fear of mathematics. 10th के बाद तो हम उनको स्ट्रीम का ऑप्शन दे देते हैं कि मैथ्स चाहिए या नहीं चाहिए, स्ट्रीम सिलेक्शन के लिए चॉइस दे देते हैं. But should this be done at the earlier level also? So my first question to Miss Nilima Sharma ma'am. Ma'am, do you think study of mathematics is important beyond class 5 and why? At time onwards, I kept reflecting over the use of mathematics, and you wouldn't believe, I mean, this panel wouldn't believe that right from the kitchen in the morning, in making, tea, and then making paratha or maybe, baking cake or cutting vegetables or anything, mathematics is used, and the children do not know that they are using it. For example, yes. if I bake a cake, what is the proportion? I'm trying to understand, I'm trying to teach a child, what is the proportion of maida and egg or maybe ghee or maybe, milk. So there it is a proportion. Then as a house manager, I also look at a broken window, the glass window. Then I have to measure the glass window, whether it is a rectangular and how many square feet it is required. Then I have to measure it. So all these things require everyday applied mathematics without our understanding this. That's my take in this. And then I may, I thought it was very important for me to tell you and inform this gathering that I have worked in CBSE. And while in my, stay there, I had coordinated one, course, Knowledge, Traditions and Practices of India. I show you this book. I took it out today. And here is a chapter on mathematics, right from the beginning of the Vedic days, how mathematics started. And it is and you will be surprised to know that this book has 18
different chapters on mathematics and chemistry and all varied subjects which are there. And this tells us that mathematics in the ancient times started with the Jyotish Vidya. When people, Jyotishis and astrologers and astronomers started calculating the distance between sun and earth, or maybe between each planet, mathematical tools were discovered at that time. So right from that time onwards, India has seen the upsurge of mathematical skills in the students. So that's my take here, that it is an indispensable part of life. You cannot do it. The only thing, the only intimidating factor these days is that we have to take out the phobia of mathematics. मैडम अलजेब्रा कहाँ यूज करती हैं आप? मैंने तो सर अलजेब्रा और हायर मैथ्स पढ़ा, लेकिन मुझे आज भी अलजेब्रा कहाँ? ट्रिग्नोमेट्री की एबीसी आती है, ना मुझे अलजेब्रा की एबीसी आती है, बट आई नो हाउ टू अप्लाई इट. नहीं तो कहाँ करती हैं? I don't remember the theorems at all, but I don't remember anything. जी जी. I know the application part of it. ये प्रश्न तो सबके लिए है, हम सबके लिए, कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री हम कहाँ अप्लाई करते हैं? अब ज्योमेट्री तो आप देखिए ना कि आपको ट्राइंगल में मिरर चाहिए या आपको रेक्टेंगल. नहीं, वो तो प्राइमरी में सिखा देते हैं हम नापना. प्राइमरी में हम इंची टेप से नापना सिखा देते हैं. हाँ, तो फिर उससे ज्यादा क्यों पढ़ाएं फिर हम? उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे, मतलब अब ये तो आप लोग मैथमेटिशियंस आप लोग हैं, आप लोग बताएंगे. हम तो अपने एज ए लेमैन पर बता सकते हैं कि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है. जी 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 जी. So Aruna ma'am, what's your perspective on this? That mathematics should be taught beyond class 5 or not? Exactly, rightly, Neelima ma'am, whatever said, I second her opinion. You know one thing, Rajini ma'am, this pandemic period, even when we talk, we have to keep 6 feet distance. Yes. एक बात में mass use नहीं था, that is when we talk, right? Yes. Even we have to maintain, we have to use mathematics over there. Now, everywhere, every step right now, Dharam sir asked, algebra, where you are using. Every step we are using algebra. Every step. Even when you walk, when you talk, we are using algebra. That is the expression, isn't it? So in English word, we say expression. In mathematical terms, we say expression. So everywhere we use mass. That is my opinion. Even then, so when you are talking about where we are using mass right now, sir asked trigonometric, where we are using. Whenever you see that is a trigonometric, which angle you are seeing, which angle of depression, which angle of elevation you are seeing, each and everywhere, that's understood. Knowingly, unknowingly, everywhere we are using mathematics. So that is one of the major subject. That's I say up to 12th standard, up to 10th standard, every child must study this mathematics so that they can stand on their own leg. For basic values they can learn. So that's why they need this mathematics, right? Thank you. Yeah, thank you so much, ma'am. So we have discussed that we are using mathematics in our day-to-day life, whether it is kitchen or whether we talk about astronomy or whether I think the pandemic has taught lots of mathematics. So Dwivedi sir, next question to you is, why understanding mathematics is becoming important? What's your views on this? Dwivedi sir? Yes, ma'am. What is the question? The question is, sir, why understanding mathematics is becoming important nowadays? Why understanding mathematics is becoming important? To, I think, analyze and find out the correct situation or correct position or correct distance, whatever you can. So it is better to go with the mathematics, and mathematics required a lot of patience. It develops a logical mathematical skill as equally important.
because ultimately, if a child is having good calculation, presence of mind, and correlate with this activeness and I think more happiness also. Because if a child is able to do the mathematics, that also gives happiness to the child. Because only that requires some patience. The child has to have more patience to do the questions and find out the answer. Because without logical way, he cannot get the answer. But unfortunately, we are providing a lot of keys to the children. So they try to grab that keys and finding the answers. That is the biggest mistake which we are doing for the children. If we can give the situation, I think CBSE is doing very great job at putting the question in the case study method. In this way, if case study questions will be given, the children will think and logically find out the answer. There is no ready-made answer for that particular question. And that will be definitely helpful for the child. I think it's very important for the children to understand questions in a better way. Okay. Thank you. Thank you. Even So- Rajini ma'am, see either food or drawing or music, what Everywhere. if you Everywhere. Understanding you of can mathematics. enjoy in that, you can enjoy in that field. Yes, So essential. without It's essential. understanding, you cannot enjoy. If there is no enjoyment, then there is no use. Happiness So- is equally important. Yeah. Yes. So Exactly. happiness Because curriculum. happiness is actually mathematics gives more happiness, I think, in other subject compared to the other subject. Because if a child is knowing the answer of Hindi, any paragraph, any Hindi question answer, but suppose he find out the answer of any particular question of mathematics, he becomes more happy. That's what I believe, Yes, and I've seen also. नहीं, but So that's there are more children who are unhappy because they can't solve a problem than the children who can solve a problem. So we need to teach them some patience that how to come up with the answer with the help of clues and So help of support. द्विवेदी सर, आपका कहना ये है कि मैथमेटिक्स हमें पेशेंस सिखाता है Yes, sir. या कुछ Patience और भी required. नहीं, हमें मैथमेटिक्स सिखाता क्या है? मैथमेटिक्स सर हमको जो है मतलब हमारे आप बेसिक स्किल्स पे आइए ना कि मैथमेटिक्स क्या सिखाता है? क्रिटिकल थिंकिंग सिखाता है, basically sir critical thinking and logical mathematical skills also develop. Yes. Dharam sir, logical approach or critical thinking. You can imagine. If you understand mathematics, you can imagine. You can creatively thinking. That means you can develop some skills in your mind through this mathematics. If you understand. If a child will be given a question and he will start thinking about the question, yes, he will definitely find out the answer. He will start searching the answer. Yes. And once he will start searching the answer, he will find out some solution also. I'm sure. Even sir, it increases focusing, listening power. So that means patience, totally. Right, I would totally subscribe to what Dr. Dwivedi says, and he says happiness. So it directly, there is a overarching principle of life skills. Mathematics develops the life skills, and under the life skills, we have critical thinking, we have logical thinking, we have, these soft skills training. So through mathematics, children learn this, but the focus now has been only the calculation. And maybe that is the error the teachers are doing, because teachers do not teach applied mathematics, which children use every day in their life. So if you have, financial literacy, if you have technological awareness, if you have, and you have all these principles, but these are all subscribed and evidenced by calculations. You look at GPS, the lady kilometers. How do you know it is 3 kilometers now? That's one. And then हम लोगों में
फिर आगे जाओ, एक गोल चक्कर आएगा, ऐसे मुड़ो वैसे मुड़ो. GPS gives you the right direction in the sense, but all based on mathematics. Absolutely. So that's Yeah. kind of exactly the logic, the beautiful logical reasoning which a child develops after learning mathematics, or maybe vice versa. If his logic is very strong, then he learns, he's good at mathematics. Perfect, ma'am. Actually, you were talking. You were, I think, showing one book also regarding that mathematics. I think so. Basic mathematics. Yes, yes. No. Tradition of mathematics. Tradition. Knowledge Yeah. Actually, traditions and that practices of India. we were talking about that book only, ma'am. Actually, I'm also mentor of basic mathematics, so we are really discussing about this to government also. Let us have a mathematical literacy program, not only language literacy program, but mathematical skill development program should be there. So FLNA already, as per NEP, is introduced. So we need to teach the basics of mathematics with the help of our Yes. old mathematics. That can teach very nicely. I'm ready telling ma'am, it's a very simple way of how to calculate. People are teaching the table of 20, after 19 table of, when they ask the child of 5 or 6, 7 also, they don't able to tell the table of 20, 19. Bilkul. But I'm telling you, in the basic mathematics, it's a very simple method to turn, not to mug up, just within 1-2 minutes, I can teach table up to 99. Any students can learn within 2 minutes. I promise. That is the beauty of mathematics. And that is given by our own. सर मेरा कहना ये है 10 रुपए का कैलकुलेटर मिलता है, हम बच्चे को कैलकुलेटिंग की स्किल क्यों सिखाएं? बिल्कुल. चाहे वो सर सवाल कैलकुलेशन का नहीं है, सर सवाल कैलकुलेशन का नहीं है क्या? नहीं तो बिल्कुल वही है कि आप कैलकुलेशन में सर क्या हुआ, फिर अपना माइंड का डेवलपमेंट, जो थिंकिंग स्किल, लॉजिकल स्किल तो नहीं होगी ना सर. नहीं तो आप तो कह रहे हैं कि वो उससे वो कहाँ सोच कहाँ रहा है, वो तो नहीं, वो उसमें सोचेगा सर. मैं आपसे बता रहा हूँ, उसमें सोचेगा. वही तो मैं बताना चाहता हूँ, उस मैथमेटिक्स में सोचने की क्रिया है, वो तो करने की क्रिया है. वो रूल को अप्लाई कर रहा है. नहीं सर, रूल को अप्लाई नहीं कर रहा सर. मैं आपको बताना चाहूँ, मैं आपको कहें तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि उसमें लॉजिकल बच्चा सोचेगा, करेगा और इन्वॉल्व होगा. वो एक्टिविटी बेस्ड है. बिल्कुल सर, आपकी बात ठीक है. और सर धर्म प्रकाश जी, मेरा एक कहना है कि कैलकुलेटर का यूज ठीक है सिखा दीजिए, लेकिन जो एक मेंटल मैथ्स था या मैथ्स के ऊपर जो कैलकुलेशंस हैं उनकी अलग बात है. आज सब्जी वाले के सामने खड़े होके अगर सब्जी लेने जाए, जो आज की मॉडर्न जनरेशन है, और उससे बोलो 350 ग्राम के जरा पैसे लगना, बैठा हुआ है लड़का छोटा, वो फट से कैलकुलेट करके बता देगा, बिकॉज उसने टेबल्स हमारी तरह से पहाड़े पढ़े हुए हैं. नॉट 2 1s are 2 and 2 2s are 4. वो अंग्रेजी हिंदी की बात है. मैडम, आज हम लोग माल्स में जाते हैं, माल्स में जाकर के जो बहुत बड़ा लंबा बिल दे दिया हमको, नोबडी इज चेकिंग द बिल्स, क्योंकि उतना सारा कैलकुलेशन को देख करके डरा जाता है. तो दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मतलब यदि बच्चों को हम कुछ चीजें कैलकुलेशन करना सिखाएं इंस्टेड ऑफ कंप्यूटर और लैपटॉप, तो कहीं ना कहीं वो विद द हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस वो अप्लाई करना शुरू करेगा और एक उसका मेंटल लेवल ठीक हो. दैट इज व्हाट आई बिलीव. मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा मैम, मॉल्स के बिल्स में मुझे 200 रुपए से लेकर के 1500 रुपए तक का डिफरेंस मिला है. बिल्कुल मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा. बिल्कुल सर. दिस इज द रियल फैक्ट. दिस इज myself, my family had purchased the material, but they have not checked the bill. Immediately I checked the bill and just asked them कि ये बिल कैसे लिया आपने. तो उन्होंने जब रिव्यू किया तो बोला नहीं, हम तो गलत पैसा दे के आए. तो ऐसा होता है, इसलिए आई डोंट नो कि हाउ मेनी पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम दैट. तो मैथमेटिक्स तो बहुत जरूरी है. वो तभी होगा जब बच्चा मैंने मैथमेटिक्स को लव करेगा, यानी उसमें हैप्पीनेस क्रिएट करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट आई बिलीव कि मैथमेटिक्स का हैप्पीनेस करिकुलम को डिजाइन करना पड़ेगा. वो मेरा कहना है. थैंक यू सर. द्विवेदी सर राइटली सेड कि हैप्पीनेस एक सीबीएसई ने भी करिकुलम इंट्रोड्यूस करा है. तो by doing different activities, I think we should make the students to वो happiness उनको मैथ्स से ढूंढनी चाहिए.
तो हमें जी, ये जी। सिखाना चाहिए कि मैथ्स में कैसे हैप्पीनेस ढूंढी जाएगी, Yes, क्योंकि yes. जब एक पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो आई थिंक स्टूडेंट्स आर टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि हाँ हमसे ये सॉल्व हो गया। मैडम टीचर के साथ भी होता है, टीचर के साथ भी होता है, यदि कोई डिफिकल्ट हमारे साथ क्वेश्चन। भी यही होता है, बिल्कुल हाँ। टीचर के साथ भी होता है, स्टूडेंट्स के साथ भी होता है। तो एक हैप्पीनेस जो Yes. करिकुलम सेंस ऑफ इंट्रोड्यूस कर रहा है, एक्साइटमेंट, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो हमें हैप्पीनेस मैथ्स टीचिंग में भी ढूंढना है, बच्चों को भी सिखाना है कि कैसे हम हैप्पीनेस उसमें मैथ्स में ढूंढे। ओके, बिल्कुल, absolutely. सो नेक्स्ट धर्म प्रकाश सर ने अभी कहा था कि अलजेब्रा हम कहाँ यूज करते हैं। तो हम पढ़ते तो सारी क्लासेस आई थिंक 6th ऑनवर्ड्स हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं, बट जब ये टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं अलजेब्रा या ज्योमेट्री, तो एक क्वेश्चन मार्क सा दिखता है स्टूडेंट्स के फेसेस पे कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो अरुणा मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज this is general opinion expressed by students that algebra and geometry is hardly used in our daily life. So why do you think it is important to teach these topics, algebra and geometry? Aruna This ma'am. is yes, ma'am. Yes, geometry is not only particular field, everywhere we use, isn't it? अभी मैम ने भी बताया, जैसे धर्म सर ने तब क्वेश्चन मार्क भी अराइज किया, जो ट्रायंगल है ये है, बट कोई भी होता है ये इमेजिनेशन होता है, विदाउट ज्योमेट्रिकल शेप कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज यूज्ड इन डे टू डे लाइफ, राइट। और दूसरी बात आप आएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दैट्स आई टोल्ड यू, दैट इज एक्सप्रेशन, either in English or science, math, if there is no expression, then there is no happiness. Either you express your feeling through English subject, either you express your ideas through science subject, either you express your calculation. So expression, that is completely algebra, addition, subtraction, calculation. So that's why what I am telling, without algebra, without geometrical, there is no day-to-day life. Everywhere we use expression. So basically, Right? this is the language of mathematics. Exactly. I don't know Dharam sir's opinion. What is Dharam sir's opinion? मैं सुनना चाहती हूँ उनका ओपिनियन, अलजेब्रा कहाँ पे ऐसे स्पेशली हम यूज कर रहे हैं। मैं तो ये बात नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि 2030 में किस तरह के जॉब्स होंगे, किस तरह का मैथमेटिक्स चाहिए। सर मैं तो उस वरिड हूँ उसके बारे में कि जैसे अचानक इस समय कोविड की वजह से डाटा हैंडलिंग पे एकदम एम्फेसिस आ गया। रोज डाटा आता है कोविड का, रोज सब लोग उसका मतलब निकालते हैं कि कोविड में क्या मतलब है। तो अगर डाटा हैंडलिंग करिकुलम में नहीं होता तो बच्चों को समझ ही नहीं आता कुछ भी। अब वो सारी चीजें समझ में आ रही हैं कुछ सबको। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 2030 में क्या और ऐसी चीजें जोड़ी जाएं जो कि बच्चों को तैयार कर दें उस समय जो जॉब्स होंगे, उस समय जो काम होंगे उनके लिए। मेरी चिंता वो है। अच्छा, ओके सर। धर्म सर, उसके लिए we should introduce applied mathematics, at least 1 or 2 topic in 9th standard, 10th standard, 11th standard. Actually applied maths को अब अलग कर दिया। You know, already I discussed with Anita ma'am also, applied maths is not so easy. अभी CBSE ने ये बताया गया, जो बेसिक लेगा 10th standard में, they will opt applied maths in 11th standard. But that child already they are weak in maths, तभी तो वो basic maths ले रहे हैं। So basic maths लेके applied means practical। और normal maths क्या होता है? memorization। नॉर्मल जो मैथ्स है, हम जो स्टैंडर्ड मैथ्स कर रहे हैं वो मेमोराइजेशन है। फॉर्मूला का बच्चा रटता है तो आगे बढ़ता है, फॉर्मूला याद होगा दे कैन, अदरवाइज नो। बट अप्लाइड मैथ्स क्या होता है? प्रैक्टिकल, प्रॉफिट, लॉस, एवरीथिंग, टैक्स, इनकम, टैक्स, जीएसटी, व्हाटएवर टोटल अमाउंट, दिस दैट। If you can give me a chance to ma'am, तो I can give example also for that. जी yes तो इसलिए जैसे एक बच्चा बॉल थ्रो करता है मैडम, एक बॉल को थ्रो किया एक बच्चा, तो यदि उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में आइडिया हो, मतलब छोटा बच्चा तो नहीं है निकलेगा, लेकिन उसको एंकी सिंगल से फेंका गया, किस स्पीड से फेंका गया, कितना फोर्स लगाया, और ये सारे एग्जांपल्स तो कहीं ना कहीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही किया।
उसके हाँ सर, ट्रैजेक्टरी किधर जा रही है, तो बच्चा एसेस कर लेता है. ही मे नॉट अंडरस्टैंड द टर्म ट्रैजेक्टरी या कितना डिस्टेंस है, बट ही इज एबल टू गेस. Nilima ma'am, even when we travel, that's I told you, algebraic expression everywhere we use. Even suppose if you are traveling, if you know per kilometer cost, you can calculate total cost through expression, linear algebra. So उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं. मतलब बिना algebraic expression there is no use. So either 2030 को हम रीच करें, 2022 पे रहे, ये बेसिक जो फंडामेंटल मैथ्स है वो बच्चों को पढ़ने की पड़ेगा. देन ओनली आइदर वो आगे हायर स्टडीज फर्दर वो प्रोसीड करे ना करे, बट बेसिक मैथमेटिक्स अप टू 10th स्टैंडर्ड ईच बच्चा पढ़ना बहुत जरूरी है लॉजिकली उनको स्टैंड करने के लिए. The whole, approach to teaching has to get revolutionized. Exactly. बच्चे को अगर पढ़ाएंगे whatever it is, वो नहीं कभी भी समझेगा. I have never understood this. बट अगर आप उसको समझना से आपको इतना हाथ बड़ा करना है इतनी बॉल लेने के लिए, he has understood algebraical equation. Exactly. Practically we have to explain. So it is an approach that is faulty, not any subject that is faulty. Okay. और एक स्पेशल इंटेलिजेंसी भी उसको सिखाता है मेरे ख्याल से. बिल्कुल. Right, sir. Right. So next, let's talk about NEP. So NEP आजकल ज्यादा ही उसमें है और करिकुलम भी फ्रेमवर्क उसका बन रहा है. तो mathematics in NEP. NEP has significant provision and provides a platform to build, nurture, foster mathematical thinking. So NEP provides the necessary nourishment by making mathematics enjoyable. So next question to you, Nilima ma'am. NEP 2020 talks about the development of mathematical thinking, logic, critical and analytical thinking. So how much it is important and how it can be developed among the students? NEP में कैसे हम thinking skills क्या हम add करें, क्या उसमें से delete तो नहीं कर add ही करें, क्या topics add करें. जैसे अभी धर्म प्रकाश सर ने कहा कि एक data handling एक topic है that must be taught. अभी सारा जो हमारा डेटा बेस्ड ही चल रहा है, जो भी पेंडेमिक में भी सारा डेटा बेस्ड चला. So Nilima ma'am, give your preview point that NEP 2020 talks about the development of mathematical thinking. I have already, mentioned once that NEP talks of life skills. Under life skills, there are some critical thinking, higher order thinking skills, which we call as per the Bloom's taxonomy, where we have analysis. So the child must be taught what is analysis, how to analyze a situation, then how to find a solution to that, then how to evaluate that, how to infer, come back to critical thinking, the pros and cons of something. What we have lagged in our, that's my personal opinion, in our culture is कि हमने traditions को ऐसे ही मान लिया बगैर उनको क्वेश्चन किए हुए कि क्यों. अब युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर फल जानू, अगर हनुमान चालीसा में ये पूरी कैलकुलेशन आती है सन तक के डिस्टेंस की, और उसकी अगर आप गूगल में पूरा उसका एक्सप्रेशन देखिए, इट इज परफेक्टली एक्यूरेट डिस्टेंस दैट हैज बीन गिवन. लेकिन हमारे पास कहीं कोई उसका वैलिड लॉजिक या कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं है. So the need of the hour now, which NEP also says, is to teach logical thinking, teach critical thinking. Develop these skills amongst the children so that they find out evidences. जो वेस्ट का हमेशा से ये फोकस रहा कि उनकी हर चीज में साइंस आ जाती है, हर चीज में एविडेंस आ जाता है. हमारा साइंटिफिक नहीं माना जाता, हमारी आयुर्वेदिक जाता, बिकॉज दे आर डिवॉइड ऑफ एविडेंसेस, प्रॉपर रिसर्च एक्सेट्रा. एनईपी का यही फोकस है, यही थ्रस्ट है कि वी नीड टू डेवलप दीज स्किल्स, और इनको इतना स्ट्रॉन्ग शुरू से करना है
लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स तो एक तरह से हमने ग्रांट कर लिया कि चलेगा, जैसे रिकॉल है, रिमेम्बरिंग है, मेमोरी है, these are all over now. We are going ahead now, and ultimately it is the creativity that comes in. Mathematics में भी बहुत ज्यादा creativity है. अब ये आपका जो ये है एलन मस्क क्या कर रहा है, it is all his creativity that he's using it, and he's taking the world by storm now. So NEP का तो focus is absolutely right, and we need to reflect over that focus again and again. Yeah, correct, ma'am. Dwivedi sir, what ways how to develop it? Dwivedi sir, what are your views on it? Yes, sir. Sir, on the same question that I've asked, that NEP talks about the development of mathematical thinking, logical thinking, analytical thinking. So how much it is important and how it can be developed? As rightly, in the very right time, I think NEP has introduced a special program for the basic foundation literacy program, apparent program. I think for 5+3+3, so that means +4. So first 5+3, especially +3 group, it's up to primary level. Mathematical skill is equally important, because at this age the child's develop its mind, body, mind develops more, and that particular moment of time, if the child has good able to communicate, that is a language, and able to calculate, so basic foundation can help the child to develop its mind as well as communication skill both. So it is equally important. How it can be developed? So it can be developed with the help of regular practice, with the help of some small activities, with the help of some kind of making fun way of learning. Okay. That can be helpful. Yeah. And I'm sure ki in this regard, our old mathematics, what we call Vedic mathematics, can help a lot. Okay. Thank you, sir. Next question, Aruna ma'am. Rajini ma'am. Yes, just now you asked how can we develop, isn't it? Yes. Actually, this NEP, what NEP is saying, you have to make competency-based education, right? You have to make each child independent. Let the child think about that. For example, so that is completely depends on the teacher, how they are making their child to think about that special topic, right? For example, my teacher always introduce variable, constant. So even variable means a child knows X is a variable and a number is a constant, for example. So I asked my teacher what example you can give for this variable. They told me so many examples, this, that. Whatever day-to-day life example you take, one plant, right? Just you calculate daily the growth of that plant. Suppose today is 5 centimeter and tomorrow is 6, day after tomorrow 7 centimeter. So that is the variable. Then constant means if you take a height of pole, that never change. So if you give like such type of example, yes, definitely you can bring competency. That means the child are forced into thinking what is that topic. Then definitely they can enjoy in that topic. So you have to correlate the topic. If you want to actually develop interest in mathematics, if you want to bring competency-based education, if you want to make a competency in your subject, then the teacher must develop that thinking. Yeah, I have one more point, that I think the language part should also be clear to the students. We should make them learn how to understand the problem. Language सबसे पहले जो हम जैसे हम कराते हैं, सबसे पहले question, let the students read the question and understand its language. Yes, exactly. तो उसके बाद ही problem solve होगी. First they have to learn. Then only they can do permutation, combination, probability.
These so are all case without study based questions, I think अच्छे introduce will हुए हैं, help. तो Yes, will help in this. Yeah. So Aruna ma'am, अभी हमने applications करी algebra और geometry की applications के बारे में बात करी कि कहाँ यूज होता है, बट एक होता है ज्योमेट्री में हम थियोरम्स भी करते हैं, थियोरम्स के प्रूफ्स भी करते हैं, तो भी क्वेश्चन मार्क होता है स्टूडेंट्स का कि हम प्रूफ क्यों कर रहे हैं, प्रूफ तो ऑलरेडी हुई हुई, हम क्या करेंगे प्रूफ करके. सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू अरुणा मैम, व्हाई डू वी एम्फसाइज प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्योमेट्रिक प्रूफ इन मैथमेटिक्स लर्निंग? See, that means this general method, for example, let me take one formula, that is the number of sides of polygon, that is 180 degree into, I hope so, n minus 2 something formula is there, isn't it? Yes. So we prove that formula through binomial, not binomial, mathematical induction, this, that, okay? Just you take one pentagon, right? Just to take it, just to bring imagination. 5 sides are there, isn't it? You draw possible triangles. That line should not cross another line, right? So I told you pentagon, I don't have any presentation here. Just you can draw, those who can, right? 5 sides we have. You have to draw just a triangle. How many triangles are there? 1, 2, 3. 3 triangles are possible, isn't it? Suppose if you take a pentagon, 5 sides, you draw a triangle. How many triangles are there? 3, isn't it? So 5 minus 2, that is, I told you formula n minus 2. So 5 minus 2 into 180 degree. You take a pentagon or hexagon, octagon, whatever. Then that formula is implemented n minus 2 into 180 degree because the triangle is 180 degree. So that formula, so when you derive this formula like this, the child can apply this formula anywhere in any polygon. So that's why this proof of mathematics is the most important for the children. But at the same time, how teacher is explaining that formula, कैसे उसको डे टू डे लाइफ में कोरिलेट करके एक्सप्लेन करें. डेरिवेशन, suppose if I say a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square, everybody knows about it, a plus b whole square. But how? Why? So then the child can develop a plus b ka whole power 5 also. If you explain them what is the theoretical of meaning behind this formula, so automatically the child can implement that formula in any expression, in any level. So that's why this proof is most important, right? Whatever I told you, you can implement. Even if you take an octagon, how many sides you draw a triangle? Definitely that is n minus 2 into 180 degree, right? So like such type of example, Dharam sir, कुछ questions पूछना चाहते हैं? अरुणा मैम, मैं ये कहूँगा कि बच्चे को डिस्कवर करने देना जी सबसे ज्यादा जरूरी है सर. रिसर्च में बहुत हेल्प करेगा बच्चे का माइंड. आई थिंक रिसर्च बेस्ड स्टडी कैन हेल्प ओनली विद द हेल्प ऑफ थ्योरम्स ओनली. बच्चा क्या मालूम हो सकता है उस थ्योरम को ही अपने तरीके से कुछ और इनोवेटिव में कर सकता है, दूसरा पाथ अपना सकता है और दूसरे रास्ते से उसका सॉल्यूशन निकाल सकता है. तो मेरे ख्याल से थ्योरम्स को पढ़ाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि बच्चों को में इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी और रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट की का होना चाहिए. वही राघवेंद्र सर, सर मुझे एक चीज लगती है, सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हमने बच्चे को कभी ये समझाया ही नहीं कि ये सारी थ्योरम सिर्फ प्लेन सरफेस पे काम करती है. जी. अगर मैं एक ट्राइंगल प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करता हूँ तब उसके तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, है ना? मगर अगर मैं स्फीयर के ऊपर ड्रॉ कर दूं एक ट्राइंगल, तब क्या होगा? ये रिजल्ट का क्या होगा? क्या बच्चा इमेजिन कर सकता है? क्या बच्चा सोच सकता है? और अगर आप एरोप्लेन में ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा जो पिक्चर वो ड्रॉ करके दिखाते हैं आपके एरोप्लेन के रूट का, वो स्ट्रेट लाइन में तो नहीं होता सर. तो जब इसका मतलब पायलट भी
जो नॉटिकल माइल बताते हैं वो आपको, वो कुछ और होते हैं, वो माइल्स के बराबर तो नहीं होते ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कोई और मैथमेटिक्स है जो वो यूज किया जा रहा है, वो मैथमेटिक्स नहीं है जो हम पढ़ा रहे हैं। मैं ये कह, वो स्फेरिकल ज्योमेट्री से रिलेटेड मैथमेटिक्स है जो पढ़ाया जाए, वहां पे काम आता है ना। तो बिल्कुल, वो हम पढ़ाते ही नहीं बच्चों के। ज्योमेट्री के अंदर जो यूक्लिड ने प्री सपोज किए थे 5 चीजें, अगर उनमें से कोई चीज बदल दो तो ज्योमेट्री बदल जाती। ये तो हम बच्चों को कभी पढ़ाते ही नहीं। धर्म सर, फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर फील्ड है ना सर, आफ्टर 12th सपोज। नहीं, मगर बच्चे की इमेजिनेशन तो आपको लोअर लेवल से ही शुरू करना पड़ेगा ना मैम। बच्चे की इमेजिनेशन को जागृत करने के लिए, क्रिएटिविटी को जागृत करने के लिए आपको लोअर लेवल से ही कुछ तरीके सोचने पड़ेंगे कि वो किसी तरह से सोचे कि इस क्वेश्चन को करने के कितने तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, धर्म सर एक्चुअली आफ्टर 10th standard they switch over into commerce stream, they switch over into art stream. So हम जो बेसिक मैथ्स है, मेरा ये ओपिनियन है सर, मे बी सो मेरा ओपिनियन ये है जो 10th स्टैंडर्ड तक सिर्फ बेसिक मैथ्स को पढ़े, बच्चा उसको डे टू डे लाइफ में यूज करे, मतलब कहीं पे भी उनका प्रॉब्लम ना आए स्टैंड करने में, इंडिविजुअलिटी में, सो माइंड को इम्प्लीमेंट करें। बट व्हेन द चाइल्ड चूज देयर लाइन, करियर पाथ जब आगे जा रहे हैं, तब इसी तरह फील्ड होगा जो जैसे आप डिस्कस कर रहे हैं, उसी तरह टॉपिक वो पढ़ेंगे तो मे भी अपना लाइन में आगे बढ़ सकता है। नहीं, दो तीन चीजें आपको समझनी पड़ेंगी जी, कि अब वो जमाने नहीं है कि कोई बच्चों को बताए, वो तो इंटरनेट पे मिल जाती है इन्फॉर्मेशन तो आसानी से। जी, इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, सो वाई बताने वाला सिचुएशन तो खत्म हो गई। अब तो समझनी है, और वो भी खुद से बच्चों को समझनी है। सेल्फ लर्निंग इज गोइंग टू बिकम द वेरी कॉमन मोड इन द कमिंग टाइम। अगर आप सेल्फ लर्नर नहीं है, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, अगर आप मोबाइल फोन में ऐप को डाउनलोड करके उसको यूज करना नहीं सीख सकते हैं, तो यू आर डन फॉर। फिर कैसे काम चलेगा आपको? मैं 74 का हूं और मैं सीख रहा हूं धीरे धीरे ये सब चीजें, धीरे धीरे सब चीजें सीख रहा हूँ, अपने आप को अपग्रेड कर रहा हूँ कि भाई ये कैसे सीखना है, कैसे करना है। कई बार मैं बहुत यंग से बच्चों से पूछता हूँ। That's good, sir. हाँ, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि से सेल्फ लर्निंग कैसे करें, कैसे बच्चे को सेल्फ लर्नर बनाएं कि वो मैथमेटिक्स में सेल्फ लर्निंग शुरू कर दे, कैसे वो बहुत सारे सॉल्यूशन एक प्रॉब्लम के ढूंढ सके, बहुत सारे आंसर्स ढूंढ सके, ओपन एंडेड क्वेश्चंस हम उसको क्या कैसे बनाना सिखाएं वगैरह वगैरह। मेरी बात वो उसको करिकुलम में कैसे इम्बेड करें, ये सब बातें हमें सोचनी पड़ेगी, वो सोचना पड़ेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा कि करिकुलम में ये सारी बातें कैसे आए, ताकि टीचर जो है वो इज फोर्स टू गिव एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, जहां पर उसका जवाब टीचर को भी नहीं पता क्या आएगा, और टीचर भी ढूंढ रहा है और बच्चे भी ढूंढ रहे हैं, दोनों ढूंढ रहे हैं। या मुझे लगता है इस तरह की हमें पेडागोजी में चेंजेस चाहिए। मुझे लगता है इस तरह की कुछ, क्योंकि वो टाइम चला गया कि अब तो मैंने देखा मेरे सामने बैठा हुआ बच्चा, अपने कोई चीज में बताता हूँ वो क्या मोबाइल पे, तभी कहता नहीं सर ये तो ये है इंटरनेट के, तो ये कह रहा जब ही जी सर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तो सर केस स्टडी क्वेश्चंस इसीलिए आई थिंक इंट्रोड्यूस किया गया है, तो दैट कैन हेल्प द चाइल्ड टू डेवलप थिंकिंग स्किल, लॉजिकल स्किल, एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग द रूट लर्निंग, एंड ये दैट विल बी डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। पेडागोजी में आई थिंक practical way of teaching that will be more important than that of the rote learning. So Raghavendra sir, we have talked about logical thinking, creative thinking, critical thinking. So today we are nowadays we are hearing the new term computational thinking.
So my next question to you, sir, is have you heard the term computational thinking and what do you understand by it? मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा था मैडम. मैं उसमें कुछ चीजें थोड़ा सा तैयार भी किया हूँ. I'll just if you can allow me, then I can please, read sir. them because ये बहुत important topic question था. मुझे लगता था कि क्वेश्चन मुझे put up करना चाहिए. Yeah, please, sir. Please. ये हमारे मैथमेटिक्स के लिए बहुत जरूरी है. तो मैं ये बताना चाहता कि कंप्यूटेशनल साइंस जिसको बोलना चाहिए, केवल मैथमेटिक्स नाम नहीं दे सकते, क्योंकि साइंटिफिक कंप्यूटिंग इज रिक्वायर्ड नाउ इन एज पर एनईपी. तो इसमें वी कैन से कि मैथमेटिकल मॉडलिंग in advanced computing capability to understand and solve complex problems. That is the area of science that spans many disciplines, but at its core, it involves the development of model as a simulation to understand the natural system also. How we can do it? This in two ways. For suppose to understand any phenomena, motion, like in physics, where modern to Newton's theory, invented by the calculus, then complexity of the problems in the science required rigorous mathematical problem. तो इसके लिए कंप्यूटर ने बहुत अच्छा, जैसे F = ma फोर्स का कैलकुलेशन निकालना है, तो they have made small keys. With the help of that keys, we can directly calculate the force, like motion of a body. And same way we can say mathematical tools of like calculus, differentiation, integration, average, matrix theory, linear algebra, solution of equation, numerical analysis, all these aspects described above can be handled numerically when exactly form of, not possible with the simple method. So this can be done with the help of computation only. So this is what I believe this computing science, computing science, or you can say computing mathematics, you can say, it is very important to understand the tools with the help of Excel sheet or some other direct keys are there, which can help the children to solve the problem. Yeah, okay. जैसा कि धर्म प्रकाश सर ने कहा कि प्रेजेंट करिकुलम में क्या चेंज करना चाहिए कि हम बच्चों को फ्यूचर रेडी बना सकें. So Nilima ma'am, next question to you. What kind of mathematics should be taught in the school, keeping in mind to 2030 और फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी? तो टेक्नोलॉजी तो आजकल ज्यादा ही यूजफुल हो गई है. इस पेंडेमिक में तो इट इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल. So Nilima ma'am, what kind of mathematics should be taught in the school? I'll just build on this computational thinking. Yeah. How it is used in English language. For example, we read a story and there are 3 or 4, maybe 2 characters who occur in the story, and they are the main, characters who build the story, the whole plot. Now, what is computational thinking is how to compare the 2 characters. How will you use computational thinking here? Here, I mean, there are 4 elements as we think, like we just Google and find out what is computational thing. 4 elements. First is a decomposition. Decomposition means just isolating the different characteristics, right? If there are 2 characters, what are their different, characteristics, and how many categories can you divide them? After decomposition, the pattern recognition. How does one character reacts to one situation? One gets really mad. One keeps a very patient profile. That's pattern recognition. The other is abstraction.
what do you, deduce out of that? What do you conclude after that? And fourth is algorithm. Whether this or that, what is the recurrence of that, pattern? And therefore, then you conclude that these two characters are like this. One is a short-tempered character, the other is a very patient character. So this is how you use computational thinking here. And that's why this kind of approach of teaching has to be, added in the pedagogy of teaching for the mathematics teachers. And it must be used cross-curricular for all the subjects. I have given the example of English. Similarly, I mean, this can generate and develop from mathematics itself, this kind of thinking, computational thinking. And based on that, we also have the design thinking, where there are different steps in design thinking. Like you ideate, you gather information, then you deduce, then you abstract the information, finally come to a conclusion. And all this can be done based on a computer. So basically it should be stepwise. So as computer is doing, every computer language is using a program. So program is a series of steps. So it should be based on that only. Exactly. Yeah. I think slowly the coding is going to replace the mathematics. Yes. Yes. So Aruna ma'am, next question to you. That what changes you expect or suggest in mathematics curriculum, in current mathematics curriculum, what should be changed to make the students future ready? Yeah, that's I told you, we have to introduce applied mathematics in common subject, not especially applied mathematics, right? Number one. Number two, income tax topic should be there in lower level classes, right? Because that is a basic knowledge. Every person, every child should know how to pay tax, why we have to pay tax, and how to calculate it. Right? That must be there in 9th or 10th standard. Already it was there. Yes. Now they have deleted. And GST has been paid every day. Yes, sir. Yes. Every bill we are paying GST. Exactly. But we don't know what is GST. Yes. We don't know the G of GST. Yes, exactly. And then even Rajini ma'am, even already there was some topic in 11th standard that is logarithmic. Yes, logarithm. Can you remember? Yes. Without that topic of physics and chemistry, it's quite difficult to calculate. But now even it has been removed. Yeah. Removed. I don't know why they completely they removed. Why they removed, I don't know. And even that integral calculus, they introduced in physics 11th standard itself, but they are studying in 12th standard. Why this much of variation? They should start in 11th standard itself, some basic. So that they can create interest in physics. That's why maximum you have seen the student never like physics subject. Why? Because of this calculation. Yes. Because of this calculus, they don't want mug up any formula. If they seen in 11th standard, that is quite easy to follow, even in physics, even in chemistry. So we need a modification in from this 6th standard to 12th standard. We need to modify NCERT books. We need to, even 6th to 8th standard, the content level is very less. Number of questions, practice question, there is no question at all. That's why maximum schools are introducing publishers' books, the private publishers' books. Maybe you have seen. But I have introduced the NCERT book. There is no content. They have given number of topics more, but there is no practice. We have to approach another book. Otherwise, you have to create questions on your own level. Right? Yes. So, and then next I told you this income tax should be introduced in 9th or 10th standard itself. Yes, I completely agree, Aruna. When I was teaching income tax in applied mathematics, I don't know how to calculate my tax. Tax is such a topic that's common. That everybody has to pay the tax. So everybody should know this topic. Or GST तो हम already दे रहे हैं. Everybody should learn what is GST. तो अभी मैं पढ़ा रही थी तो मुझे खुद
पढ़ना पड़ा, because we don't know, we have मैडम not हमारे टाइम में पहले 9th में होता था Yes sir, context yes का, हाँ, sir. छोटा सा और पार्ट होता था, इवन but 8th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा है, 8th हाँ क्लास जी, में हाँ हमारे जी। टाइम में। तो अभी ये तो 10th में टॉपिक्स था बिल्कुल, सर। आई एग्री Yeah. अर्चना मैम, ये टॉपिक्स Yeah. कुछ कॉमन टॉपिक्स होने चाहिए। हाँ, as और a same, 11th 12th में तो भी मैं कुछ सजेस्ट करूंगा मैम। yeah, हाँ जी, yes हाँ sir. जी सर। 11th 12th में भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमको मेरे ख्याल से डिलीट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, 10th ये में भी sir. क्लास 11th में होना चाहिए। अच्छा अच्छा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल आइडिया 11th में होना चाहिए। हम जाके Straight 12th में है sir, straight line is there Straight in पेयर line ऑफ is स्ट्रेट there, लाइन, sir. पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, एक सिंगल लाइन का नहीं, हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। Pair of straight lines. Yes, So this should be there. intersection part is there, intersection of two straight lines. बाइनरी मैथमेटिक्स भी होना चाहिए मैम, बाइनरी नंबर का Binary is मैथमेटिक्स भी there होना in चाहिए। applied mathematics, तो but standard में भी लेकिन मेन मैथमेटिक्स में नहीं है। नहीं, मेन में नहीं है सर। But sir, that I is don't know in, why. that is in computers topic sir, that is Boolean algebra, binary operation. I think some of the topics लेकिन मैडम already, हकीकत में साइंस में सब बहुत ज्यादा इसका एप्लीकेशन है, हाँ सर, हाँ सर, लेकिन वो साइंस वाले को नहीं पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स वाले को पढ़ा रहे हैं। हाँ, ये मेरा क्वेश्चन है। but you know sir that statistics in 11th standard, Yes. they are studying same topic in 2 times, you know, they studied in 10th standard the same topic they are studying. There is Yes. no difference. Difference. Same mean median, it's no use of that stat in 11th standard, even that sequence and series they studied in 10th standard. क्लास 12th में मैम एक चैप्टर है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट्स, हाँ वेक्टर सर, ट्रिपल हाँ अलजेब्रा में, सर, yes, वो हाँ भी सर, मतलब आई डोंट थिंक कि इट शुड बी देयर, वो बहुत हाई स्टैंडर्ड, यहाँ हाई लेवल पे चले गए, हाई लेवल को हो जाता है बच्चों के लिए। हाँ। तो ये But थोड़ा सा Rajini ma'am, you know, already it was part A, part B and part Yes, C. yes. You know? Earlier it was part So A, B, part C. B, yeah, part B made for that science student. Science Part student, C was yes. made for Commerce commerce. students. That was one of the best part. I don't know why they removed Why that they one. have- That's, I don't know why this commerce students are studying 3-dimensional vector algebra, where they will use. What is the purpose of that one? never use. There is no use. See, practically science student will use in career, in their career, but commerce students का कोई use नहीं है. Suppose बिल्कुल. if they study partnership, if they study bills of exchange in 11th and 12th, that will help them. I don't know why they have removed that one. I don't know. So मैं तो strongly बोलूंगी वो होना चाहिए. Yeah. होना चाहिए, so that ये कॉमर्स स्टूडेंट बहुत अच्छे से पढ़ेगा, उसको लाइक करेगा. If you have interest, definitely you can. If you don't have interest, वही rote learning basis. When we are talking about competency based education, when we are talking about NEP, we have to reduce curriculum and we have to modify our curriculum. तब NEP proper तरीका से हम implement कर पाएंगे. So we have taken lots of time. So Dwivedi sir, last question to you. What Indian knowledge system of mathematics shall be introduced in school and why? What Indian knowledge system of mathematics should be introduced? Dwivedi sir. I think Vedic maths. Yes, Vedic mathematics must be introduced, madam. Vedic mathematics actually Vedic नहीं है, बल्कि वो मतलब ज्ञान का भंडार है. बिल्कुल. और हमारे बच्चों में जो हमारे NEP कहता है कि बच्चों में लॉजिकल मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना है, तो वैदिक मैथमेटिक्स सबसे अच्छा टूल्स हो सकता है मेरे ख्याल से. मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मतलब हम लोगों ने खुद भी एक इस पे काम किया है बहुत सारा, और जितने सारे फॉर्मूले क्लास 6, 7, 8 के हैं, हम बच्चों को इतने अच्छे ढंग से समझा सकते हैं, जो कि 10 स्टेप में बच्चा MBA करता है वो हम 3 स्टेप में करके दिखाते हैं, और कोई फॉर्मूला नहीं, कोई वो नहीं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक उसमें है, उस लॉजिक को थोड़ा सोचना पड़ेगा बच्चे को और उसको अप्लाई करके देखना. तो चाहे वो स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो, चाहे इक्वेशन हो, चाहे वो आपका मतलब कैलकुलेशन हो, और मतलब इन सब के बारे में भी बहुत अच्छे से किया जा सकता है. बस तो मैं ये कहूंगा कि इंट्रोडक्शन जो वैदिक मैथमेटिक्स हमारा है, जो हमारे श्री रामकृष्ण जी महाराज जी ने दिया था, शंकराचार्य जी ने, उसको बहुत अच्छे से समझाने की आवश्यकता है और इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है.
और उस Yes. पार्ट को आज कंपेयर करके देख भी सकते हैं कि जो क्वेश्चन बच्चा 2 घंटे में करता है उस क्वेश्चन को 2 मिनट में किया जाता है। 2 घंटे तक सोच कर परेशान रहता है, उसका आंसर उसको नहीं मिलता, हम उसको 3 मिनट या 2 से 3 मिनट में आराम से कर सकते हैं, वैदिक मेथड से बात करें, जो कि बहुत पॉसिबल है। हम यदि हम किसी बच्चे को बोल दें कि हम 10 की पावर 7 इंटू 10 पावर 7 की वैल्यू निकालें या 7 पावर 10 की वैल्यू निकालें, तो ये बच्चे के लिए बहुत सिंपल नहीं है। Yes. और हमारा कोई भी गणित नहीं बताता कि y 8 8 जा 64, y 11 11 जा 121, पर वैदिक मैथमेटिक्स ये बताता है कि क्यों 8 8 जा 64। तो ये जब बच्चे को इसका जानकारी होगा कि क्यों ऐसा होता है, 6 6 बहुत जब 6 6 जा 36 क्यों होता है, तो उसकी जानकारी केवल हमारे वैदिक मैथमेटिक्स में है। मैं इसलिए चाहूंगा कि इसको इंट्रोड्यूस होना चाहिए। Thank you. Thank you, sir. Thank you, Aruna ma'am. Thank you, Nilima ma'am. Thank you, Dwivedi sir, for your valuable inputs. It was a very healthy discussion, so that the changes according to the NEPs can be done in the new curriculum. Anupama ma'am. Rajani ma'am, Yeah. Rajani Yes, ma'am, today's beautiful part is Nilima ma'am participation. yes. That is multidisciplinary. Yes. Multidisciplinary. This is called multidisciplinary. Yeah, This is called multidisciplinary. And Yes. she quoted very good example. Yes. She quoted Absolutely. very good example for proportion, ratio, Yes. and For computational computational thinking as well. Yes. Absolutely. And Nilima ma'am, well done, Sabash, Yes, Nilima. thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Multidisciplinary. Yes, yes. That credit goes to Anupama.